what's up? Welcome back to my YouTube channel. So if anyone of you is new here, hello, my name is Tushka Goswami and आज का वीडियो में I'm gonna try the famous heatless curds. So वो तो आपने देखा ही होगा, like I will put a picture here as well कि इधर से वो एक रबर काइंड ऑफ चीज को बांधते हैं एंड देन दे टाई इट एंड लीव इट फॉर ओवरनाइट एंड हाउ ब्यूटीफुल दोस कर्ल्स लुक, वो तो हमने देखा ही है बिकॉज इट्स सो मच ट्रेंडी राइट नाउ इन द इंटरनेट. So anyways, I thought कि I love curls as well. Neither I have curls, neither I have straight hair. So मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये ट्रेंड, बट I was like कि कौन ऑर्डर करेगा just to try whether it works or not. So मैंने एक दो वीडियोस देखे YouTube में ही, तो उसमें many people have done that with scarf, but I like according to them it has not worked, like 50-50 रेशियो था. किसी ने बोला वर्क किया, किसी ने बोला वर्क नहीं किया. सो आई थॉट कि खुद ही ट्राई कर लेते हैं, लेट माय ऑडियंस नो कि वेदर इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट, सो दैट आपको भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अमेजोन में इट्स फॉर 600-700 रुपीज आई गेस, बट जब आप एक दुपट्टे के साथ कर सकते हो, लाइक मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, तो आपको अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर इफ इट डजंट वर्क तो आप करो कर. सो विदाउट फर्दर ado, let's just jump into our video. And if you guys are new to my channel, do subscribe down to stay connected with me because I come with videos every week. Now let's get started. First, आपको एक दुपट्टा लेना है. I just wish it works. Like मैं इसको थोड़ा फोल्ड भी कर दे रही हूँ so that यहाँ पे ग्रिप अच्छी बनी रहे. And just keeping it like this. Oh, uneven हो रहा है. Yeah. And अपने बालों को सेपरेट करो. Okay, I guess I need some clutcher as well. Just a minute, I will be back with clutcher. I have done my hair sections as well. So now you have to take this and start rolling. Roll. And just keep on doing this. I have guys टाइट करना है आपको इसको पूरा, तो ट्राई करो जितने टाइट कर्ल्स हो पाए ना, लाइक उतने बेटर कर्ल्स होंगे. फाइनली एक तरफ का कंप्लीट हुआ. पूरे 5 मिनट लगे मेरे को सिर्फ एक साइड करने में. क्रेजी. So it is tight. Now I'm gonna need a bun and fix it. I'm gonna just keep it like this and spray some water. Right now ओके. सो मेरा राइट साइड का बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, बट फाइनली अभी एटलीस्ट स्टेबल तो हुआ. वो स्टेबल ही नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ माई दुपट्टा. बट एनीवे, सो नाउ आई हैव टू कीप दिस फॉर 6 to 7 hours, और यू कैन ऑल्सो कीप इट फॉर ओवरनाइट फॉर बेटर रिजल्ट्स. बट मैं ओवरनाइट तो नहीं रखने वाली हूँ, जस्ट कीप इट फॉर 6-7 hours. अभी बजे दोपहर के शाम के 6-7 बजे. लेट्स सी ये ओपन करने के बाद मेरा लाइक कर्ल्स का क्या हाल रहता है. सो इन द मीनवाइल गाइस, जब तक हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब डाउन टू माय चैनल बिलो टू स्टे कनेक्टेड विद मी. फाइनली टाइम टू रिवील कि अभी मेरे बाल कर्ल हुए हैं भी कि नहीं. एंड एज यू कैन सी इस तरफ का तो पूरा ओपन ही हो चुका है. इस तरफ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तब भी लाइक स्टेबल होने में. एंड अभी 7 तो नहीं बजे, 6 o'clock राइट नाउ इन द इवनिंग. एंड बिकॉज ये बार बार ओपन हो जा रहा है, सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स जस्ट ओपन इट. एंड बिकॉज इससे ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा बिकॉज बाल भी बहुत दुख भी रहे हैं. सो लेट्स जस्ट सी. आई होप इट लुक्स लवली. मतलब बाहर से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. पहले इसी तरफ को ओपन करके देखते हैं.
Oh my god, this is absolutely amazing. Whoa, just look at the curls, guys. आई मीन मैं नहीं बोलूँगी कि ये परफेक्ट कर्ल्स है, बट इट्स मोर ऑफ अ वेरी वेवी काइंड ऑफ टेक्सचर विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई एम इन कंप्लीट लव विद दिस हेयर स्टाइल. लाइक मुझे हमेशा से जब भी आई वॉज सिंगिंग ऑफ वेवी, सो दिस वॉज ओनली द टेक्सचर जो मैं हमेशा सोचा करती थी एंड यही मुझे मिला. दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल. ऐसा लग रहा मैं किसी सैलून में से आई हूँ. So for me guys, this heatless curl hack is a total yay. अगर आपको और perfect curls चाहिए, ऐसे wavy नहीं चाहिए, then keep it for like overnight ही रखो, वही मैं like suggest करूँगी. Otherwise अगर आपको ऐसे wavy textures पसंद है, then 3-4 घंटे में भी आपको ये texture मिल जाएंगे. Just make sure कि आप अपने बालों को tightly roll out करो, because tight रहेंगे तभी वो actual curl shape में आएगा. Loose रहेगा so obviously वो open करते साथ जिस texture में था वही texture continue रहने वाला है. Just keep your curls tight. This video comes to an end. I hope that you guys enjoy watching my video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then please don't forget to give it a thumbs up and do subscribe down to my channel because I come with videos every week, so just subscribe down to stay connected with me and I will see you guys next week. Bye.